की सबसे बड़ी खबर में आपको अपडेट कर दें। राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो चुका है। एनडीएमसी ने इस पर अब आधिकारिक मुहर लगा दी है। अभी तक सिर्फ चर्चा था ये, लेकिन अब ये चर्चा नहीं, राजपथ का नाम बदल चुका है। कर्तव्य पथ एनडीएमसी ने आधिकारिक मुहर लगा दी है। ये ताजा अपडेट। जिस दिल्ली के राजपथ को अभी आप राजपथ के नाम से जानते थे, वो अब राजपथ नहीं कर्तव्य पथ के नाम से जानेंगे। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो with the idea of ruling over others. The idea of democracy is not to rule over others. The idea of democracy is participatory nature, and people need to be bound by the duties. And when we are bound by the duties, the fulfillment of duty on part of one person will automatically lead to completion of rights of the other people. A small example, while we were discussing this particular subject, we also discussed this. A small example was brought up, and the example is that if a father is complying with his duties towards his family, his children, automatically the rights of the children get to be fulfilled. And similarly, if the children are complying with their duty towards their father and parents or elderly people, automatically their rights get to be fulfilled. So the emphasis, instead of being adhikar based or the rights based society, the Indian society is duty based. We've had the history of Shravan Kumars in this country. We've had the example of Ram. We've had so many examples where people from the statecraft to personal lives have been duty bound, and thus inspiration needs to be brought forward, which is bound by the duty. I'm sure many of these things were in the minds, and as Prime Minister of India, Narendra Modi ji, already has spoken about it, that this is the time when we are celebrating Amrit Mahotsav. And this Amrit Kal needs to inspire all of us to take forward our duties and do whatever is needed towards the country. And if we go over the directive principles of state policies, and especially 51A is reread, we will understand that today's decision is in line with subsection B, subarticle B and J, where the inspiration has to be about freedom movement, respect for the constitution, respect for the national flag, and duty towards all. And that duty towards all for all times to come will inspire all Indians to be bound by the duties towards nation and society at large, and of course the family. And this is a big change in the thinking of governance, especially because in governance system till now, post independence, 75 years have gone past, and the inspiration came from ruling over our own people, ruling over the people of this country. From that mindset, the mindset needs to change, and it has to be duty towards our nation for all individuals. Taking care of government property, taking care of public life, taking care of everybody. I mean, if we go over that, and if every citizen of this country complies with the duties, I think मीनाक्षी लेखी को इस वक्त आप सुन रहे थे, और जो खबर हम आपको अपडेट कर रहे थे उससे ही जुड़ी हुई बड़ी बातें वो बता भी रही थी कि भारत का ये अमृत महोत्सव चल रहा है और हमें इस अमृत काल में और भी बड़े फैसले लेने हैं, भारत की बेहतरी के लिए फैसले लेने हैं, और ऐसे फैसले लेने हैं जिससे कि आम लोगों का भला भी हो। और इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो ये कि एनडीएमसी ने आधिकारिक मुहर किस बात को लेकर लगाई है। राजपथ का नाम अब हो चुका है कर्तव्य पथ। ये नया नाम और नया नाम, नई पहचान इसकी हो चुकी है, और इससे जुड़ी बड़ी जानकारी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ ये चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन चर्चा ही नहीं बल्कि इसको लेकर जो पूरी प्रक्रिया है उसे कंप्लीट कर ली गई है। यानी एनडीएमसी जिसके आधिकारिक मुहर से किसी भी जगह का नाम बदल जाता है, अगर कहीं कोई लोकेशन का नाम चेंज करना है तो ऐसी तब्दीलियां इससे पहले भी बहुत जगहों के लोकेशन को लेकर हो चुकी है। तो उसी कड़ी में आज जो नया बदलाव है वो है राजपथ को लेकर, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कुछ लोग सवाल उठा रहे थे उनके लिए ये जवाब है कि सर्वसम्मति से ये हो चुका है आधिकारिक मुहर, यानी किसी को कहीं किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी।